Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and in this video we are going to learn how can we represent under root 3 on number line. So for this you must learn how you can draw under root 2 on the number line. If you don't know, यदि आप नहीं जानते हैं कि अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए आप अपने वीडियो के राइट साइड में आई टैब लिंक पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं अंडर रूट 2 को नंबर 9 पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। सो फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो अबाउट दीज स्पेसेस, हमें कितने लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, लेट दिस पॉइंट ओ, नेम दिस पॉइंट एज ओ एंड नेम दिस पॉइंट एज बी, sorry A. So now this OA will be 1 unit. On point A you have to draw a perpendicular. Then on this perpendicular you have to make an arc of 1 unit. The length of this arc will be 1 unit. Then you mark this point, name, suppose the name of this point is B. Then you join this OB, and that OB, the length of this OB will be under root 2. If you have to represent only under root 2, then our work has been done. But in this video we are going to learn how we can represent under root 3. So just some more steps are there which we have to follow. Now on this point B, and making a right angle with this line OB, you have to draw another line that will make a right angle with this line OB. इस OB से 90 का एंगल बनाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और हम कह सकते हैं कि हमें इस OB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जैसे आपने यहाँ इस OA पर किया था. सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाइड हेयर ऑल्सो. देन ऑन दिस न्यूली ड्रॉन लाइन we have to make an arc of length 1 unit, same as we have marked here of length 1 unit. Again you have to take B as center. B को आपको सेंटर लेना है और यहाँ से आप एक 1 यूनिट की आर्क लगाएंगे. लेट द पॉइंट ऑफ दिस नेम इज C. मान लेते हैं कि इस पॉइंट का क्या नाम है, C है. अब आपने क्या करना है, अब आप O से C को ज्वाइन करेंगे एंड दैट लेंथ OC विल बी आवर रिक्वायर्ड लेंथ. हाउ वी कैन सी this? Now OBC is a right angle triangle and OC will be the hypotenuse, so OC square will be equal to OB square plus BC square, and this OB is under root 2 and this BC is 1. We replace the value of OB and BC, so when we do the square of under root 2, we get 2 and the square of 1 is 1, so this 2 plus 3 becomes 2 plus 1 becomes 3. So now taking square root on both sides, we get OC is equal to under root 3. It means the length, this length OC will be under root 3. Now this length we need on our number line here. So what you have to do, just take O as center and make an arc equal to OC, which is the required length under root 3, and then make an arc which intersect the line on the point D, जो हमारे नंबर लाइन को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगी. कैसी आर्क आप यहाँ से लगाएंगे. सो दिस द लेंथ OD विल बी आवर रिक्वायर्ड लेंथ अंडर रूट 3 यूनिट. सो वी कैन प्लेस एन एरो टू डिस्टिंग्विश दिस. सो दिस इज the position of under root 3 on the number line. So this way we can easily represent under root 3 on the number line. So hope you have enjoyed the video. So thank you for watching.